सर सेशन स्टार्ट करिए हरी सर। Very good morning, everyone. I, CA Harry Bateja, Chairman Shri Ganganagar branch of CIRC of ICI, on behalf of the Professional Skills Enrichment Committee ICI, welcome all the participants in today's webcast on balanced bliss, nurturing your well-being. I welcome today's resource person, Ms. Renita Kapoor, and the event enablers from the Shri Ganganagar branch and others present over here. So now I'm going to introduce our today's session speaker, Ms. Ranita Kapoor ji. Ms. Ranita Kapoor, an award-winning actor, motivational speaker, transformation and soft skill coach, and certified speech and drama trainer. With over 20 years of international experience, Ms. Ranita has inspired countless individuals and organizations to embrace their authenticity and become the best version of themselves. Her unique approach combines interactive techniques from her theater and acting background, making her sessions an unforgettable experience. Ms. Renita is a strong advocate for self-care and mental health awareness. She believes that understanding our weaknesses and working on them is the key to real transformation. So now I request Ms. Renita ji for her deliberation. Thank you so much, Harry Ji. Thank you for having me, Dr. Sambit. Good morning, everyone. Introduction हो चुका है मेरा. So थोड़ा सा और अपना एक can I share my screen now? Yeah, you can share it. Yeah? All right. Okay. Can you see the screen, Harry Ji? Just give me a thumbs up. Yeah, ma'am. Yeah. All right. Okay. Hi, everyone. I'll share my name again. My name is Renita S. Kapoor, and I'm an actor. Apart from being an actor, I've more than 20 years of experience in Singapore and America, working in various fields, and then becoming a certified trainer for soft skills and speech and drama. So here we are with our topic for today, that is balanced bliss and nurturing your well-being. Balanced bliss. Without balance, do you think anything can ever work in this universe? Well, according to me, or if we look around in our lives, जब तक हर चीज में किसी भी चीज में बैलेंस नहीं होगा वो चीज चल ही नहीं पाएगी. For example, let me open the right slide for that. 1 second. We live in a fast-paced world where juggling work, personal commitments, and taking care of ourselves can feel like an impossible task. मुश्किल है. आजकल की दुनिया में तो और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर चीज हमें खुद करनी है. Most of the people, most of the couples, both men and women, everybody is working. Even kids are overworked. अब ऐसी एक lifestyle में, how do you maintain a balance? Because if you do not maintain a balance, you cannot lead a balanced life. And a balanced life means a life जिसमें fulfillment हो, जिसमें एक achievement की feeling हो, जिसमें हर वक्त आप drained out ना feel करें, जिसमें you feel that you are leading a happy and a good life. बैलेंस की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि हमारे आसपास हमारी लाइफ में कोई भी चीज जिसमें भी अगर बैलेंस नहीं होगा वो चल नहीं पाएगी. अब एक ट्रेन है, ट्रेन में अगर एक तरफ की पटरी टूट जाए तो क्या होता है? ट्रेन just gets derailed. सेम कार, स्कूटर, रिक्शा, यूनिवर्स में देखें तो अगर पेड़ों को देखें, जितनी ही गहरे रूट्स होंगे उतना ही ऊपर पेड़ स्ट्रॉन्ग होगा. देयर इज अ बैलेंस, ऊपर और नीचे का बैलेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम देखते हैं आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है. एयर में जब पोल्यूशन है तो एक बैलेंस बिगड़ गया है. सबको अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है. सो माय होल पॉइंट ऑफ शेयरिंग दीज रियल एग्जांपल्स इज दैट there has to be a balance in life, otherwise you cannot lead a good and a happy life.
Yes, this was my question. How important is it to have balance in life? We've already discussed this, and I would like you to think about it. I know हम यहाँ interaction नहीं कर सकते हैं, but if you are listening to me and you're seeing this question on the screen, how important is it to have balance in life? I would urge all of you to think about this and maybe make some notes, write down somewhere. क्यों जरूरी है balance life में? Well, let's see. Just 1 second. Achieving balance in life is essential for overall well-being and fulfillment. When life is balanced, it means we are giving adequate attention to the different areas that contribute to our happiness. Work, family, personal health, hobbies, and social connections. Without balance, we risk burnout, stress, and dissatisfaction, which can negatively impact our mental and physical health, relationships, and productivity. Who doesn't want a life जिसमें सारी चीजें अच्छी चल रही हैं? कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी मतलब बैलेंस बिगड़ गया. Having balance allows us to recharge, stay focused, and maintain a sense of purpose in life. It helps in managing stress, improving resilience, and fostering a healthier mindset. If we talk about this, managing stress and living a healthier mental, emotional, physical health in our lives, how many of you actually do something for your health on a daily basis? आपने देखा होगा जो लोग एक बैलेंस बना के जीते हैं, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के योगा, मेडिटेशन या कोई किसी भी किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज या कोई स्पोर्ट, they start their day like that, then they go to work, then they do their work, finish their work and come back home, and then they have a routine which is healthy and balanced. You will always see कि उनकी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ही कम होंगे, मेंटली जो स्ट्रेस लेवल्स होते हैं वो भी कम होंगे, बिकॉज दे आर लीडिंग अ बैलेंस लाइफ. बट आर वी? आई डोंट थिंक सो. हम बात करते हैं इस बारे में, पर कितने हैं हम में से जो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? Essentially, balance in life enables us to live more sustainably and enjoy life's diverse experiences. अगर हमारी एक दिन तबीयत खराब हो जाए, like if we are down with fever या body ache या back ache, कुछ भी, कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम बॉडी में अगर आ जाए, are you able to enjoy that day? Are you able to feel good during that day? No. क्यों? क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया. तबीयत खराब हुई, वहीं पे आपका बैलेंस बिगड़ गया. That is why it is important to maintain a balance in life. Let's look at our lives. Are we living a balanced life? What is an average daily routine of a CA or any working professional? I have specifically mentioned CA because I have myself lived a corporate life. Corporate jobs kari hai maine. I have never been a CA, but I see a difference because I think the kind of workload on CAs and CA firms is way more than any other job scope. एक एवरेज मैंने रूटीन यहाँ पे बनाया है. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के साथ ये सही बैठता है नहीं, बट दिस इज व्हाट एन एवरेज routine for a CA looks like. Morning, 6 a.m. to 7:30 a.m. Wake up and morning routine, exercise, meditation, breakfast, getting ready. I don't know how many of you all actually do this every day. 7:30 a.m. to 8:30 a.m. commute to work, if not working remotely. Workday, 8:30 a.m. to 9 a.m. arrive at office or log into your online office. 9 a.m. to 12 p.m. focused work, client meetings, financial analysis, audit reviews, report generation, etc., etc., etc. 12 p.m. to 1 p.m. lunch break. 1 p.m. to 3 p.m. continued working, financial reporting, tax filings, or projects. 3 p.m. to 4 p.m. team meetings or calls. Discuss ongoing projects, deadlines, etc. 5:30 p.m. to 6 p.m. respond to emails, client follow-ups, documentation. More than half of your day is gone. Evening, 6 p.m. to 7 p.m. probably commute and go back home.
7 p.m. to 8 p.m., relax, unwind, or spend time with your family. 8 to 9 p.m. dinner, 9 p.m. to 10 p.m. personal time, reading books, hobbies, TV, or winding down. 10 p.m. to 11 p.m., prepare for the next day and sleep. Now, this routine, it varies based on personal preferences, workload, deadlines, and responsibilities. CAs and other professionals might also have additional commitments, such as networking events, continued education, or personal projects in the evening or weekend. Let's talk about this balance. Well, according to me, जहाँ पे हम work और life में एक balance maintain करने की बात करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि ये अलग क्यों? Why is work, life, why are they different? They are not. Because most of the time, most of the hours of your day, you are working. So it is a part of your life, right? Now, the balance that you need to maintain is between your personal life and your professional life, which most of us are not maintaining. And usi ki wajah se, the lot of issues coming up with bringing up your kids because they do not get enough time. We ourselves do not get enough time for ourselves, for our family, for our preferences, for our happiness, for our rejuvenation. And hence, life just goes on and on and on. And then anxiety starts, stress starts, all those kind of problems. They just seep into our lives. Achieving this balance, again, I'm deleting the word work life. Achieving this balance is a never ending journey, and your needs will change over time. The key is to make time for what you love and follow your passions relentlessly. I wish I could see you all to get a response, but एक सवाल है आप सबसे, आप अपने मन में सोचिएगा, and maybe make a note of this. How many of you are actually following any kind of passion that you have? Maybe singing, dancing, any kind of sport, writing, reading. कोई एक ऐसी चीज जिसको करने से आपको खुशी मिलती है. कितने हैं आप में से लोग जो ये करते हैं? अगर नहीं करते हैं, then I would advise, please start doing that. That would be the first step in your life to start creating a balance. All right, next question. Are we living to work or working to live? Take a moment, think about this question, and maybe make a note of this. क्या हम काम करने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए काम कर रहे हैं? There's a lot of difference in both things. Living to work. This mindset is often associated with a work-centric life where professional success and career achievements take priority. For some, work becomes a primary source of identity, purpose, and fulfillment. However, it can lead to burnout, stress, and a sense of missing out on life's other aspects, such as relationships, personal growth, and leisure. अब दूसरा तरीका जीने का, working to live. This approach emphasizes the idea that work is a means to live. हम क्यों काम कर रहे हैं? हम ये भूल जाते हैं. कहीं ना कहीं it just goes, कहीं lost हो जाता है. हमें लगता है कि बस life में बस काम ही काम है और कुछ नहीं. I'm not saying कि काम ना करें. काम नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? वही यहाँ पे, वही बात मैं बोल रही हूँ. Working to live. If we live with this approach, then it emphasizes the idea that work is a means to an end. हम काम कर रहे हैं जिससे हम पैसा कमाएंगे, एक fulfillment मिलेगी, एक जिंदगी में मिलेगी, हमने कुछ achieve किया है, and then we are able to live a balanced and a happy life. A way to support the life we want to live outside of our jobs. It's about earning a living while prioritizing personal time, hobbies, family, and self-care. I really promote this. I almost in every webinar, every workshop, every keynote speaker event, I only and only emphasize on self-care because that is one thing we tend to forget. अभी हम उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे.
So it's about earning a living while prioritizing personal time, hobbies, family, and self care. The focus is on achieving a balance that allows us to enjoy life without letting work consume us. Sometimes we come in that loop of overworking so much कि हम भूल ही जाते हैं कि लाइफ में कुछ और भी है. We forget ourselves, we forget our family, we forget our passions, we forget everything, and we just work, work and work and work. But उससे होगा क्या? आज आप काम कर लेंगे, अगले 5 साल कर लेंगे, 10 साल कर लेंगे. After few years, you will become so exhausted, then you will not know what to do. So the time to start living a balanced and a blissful life is now, not tomorrow. Ultimately, the ideal situation is finding a healthy balance between the two, personal life and your professional life, where work provides meaning and financial security, but life outside of work is equally valued and nurtured. The answer may vary depending on individual goals, values, and personal circumstances, but striving for balance is the key to long term happiness and well being. See, the problems will come, situations will come. Life hai, it cannot just go smooth like that. You know, वो एक मेडिकल इक्विपमेंट होता है ना, वो मशीन होती है जिसमें हार्ट बीट, आपका हार्ट रेट जो रीड करती है. So many movies we see that, right? So your heart is going and उसमें एक ग्राफ बनता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. And the time it becomes one line means you're dead. वैसे ही लाइफ है. Ups and downs, problems, then solutions, then again challenges, then solutions, kahin happiness, kahin sadness. Things will keep coming. Life hai. People will face problems. You will face problems. But how do you maintain that balance? And that is what we are going to learn today in today's session. Towards the end of this session, yes. Isn't this term and concept of work-life balance very new? जब हम छोटे थे, I mean, I'm talking about my age group, probably people who are in their mid-40s. When we were kids, क्या हमने कभी ऐसी अपनी फैमिली में इतनी कोई प्रॉब्लम्स देखी हैं ऐसी? I don't think so. I don't remember. Like when my father used to come back home after work, he had a clear-cut line. कि अब now I am home and now my time is only for my children, for my wife, and for my family. At that point of time, people could demarcate that because टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं था. आज की डेट में हम हर वक्त अपने साथ अपना गैजेट, लैपटॉप, आईपैड, फोन्स, wherever we go, whenever we go, we are always carrying our work with us. So how do you mark a difference then? पहले तो आसान था, एक बारी ऑफिस से निकले, घर पहुंचे तो ऑफिस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है. देन आज की डेट में हमारे हाथ में इतना कुछ है दैट वी गेट, इवन इफ वी वांट, हम वो लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते. सबको आदत पड़ चुकी है. बट अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट you need to create that line, you need to draw that line, that no, now it is time for my family, it is time for myself, it is time for home, and work should be out. Yes, there may be times when there is an emergency which bahut hi crucial hai, which needs to be taken care of, but that cannot happen every day. Again, if you do that every day, there will be no balance, and ultimately someday or the other you will crash. Let's look at another aspect of the way we are living our lives. Are we living a life that we want to live? I repeat that. Are we living a life that we want to live, or are we living it to keep up with others and for others' approvals? Think about it. I'll repeat the whole question and then think about it, what I'm saying. आप क्या ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आप खुद अपने मन से, अपने दिल से, अपनी खुशी से जीना चाहते हैं, या आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो
दूसरों के अप्रूवल्स, दूसरों के जजमेंट्स के लिए जी जाती है, या दूसरों को कुछ प्रूव करने के लिए जी जाती है? What kind of a life are you living? And I can guarantee it, most of us are living a life these days जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए, या अपनी एक मार्क बनाने के लिए, लुक, आई एम दिस. इट्स बेसिकली टू शो अदर्स that yes, I am doing this. But is it really giving you happiness? If it is, great. But if it is not, then please, it's time to check. It's time to check and bring about that change. Otherwise, balance बिगड़ जाएगा. एक और सवाल. Are we all just running or driving in some kind of a race? Whenever I go out, like जैसे ही हम सड़क पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कभी कभी मन में सवाल आता है देख के कि सब लोग कहाँ भाग रहे हैं? Where is everybody running? Why is everybody running? Why is everybody in such a rush, in such a haste? क्यों है इतना कंपटीशन? क्या मिल जाएगा ये प्रूव करके कि आई एम डूइंग बेटर देन यू? अनलेस you can satisfy yourself with your own growth. एक होता है अपने आप के साथ कंपटीशन करना, और एक होता है पूरी दुनिया के साथ कंपटीशन करना. अगर हम अपने आप के साथ compete करते हैं, means you're trying to be a better person every day, every minute, every hour, not to prove it to somebody else, but for our own self. अपनी खुद की ग्रोथ, अपनी खुद के सेटिस्फैक्शन, अपनी खुद की खुशी के लिए, not for anybody else. दोनों में बहुत अंतर है. And if you start somehow living a life where आपको किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए करना है, वो भी एक तरीके का बैलेंस है. And if you start living like that, you will feel that change in your life. You will feel that balance in your life. ये क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है. Are we all just running or driving in some kind of a race? What for? To achieve what? Why are we doing this? What will we get out of it? Think about it. Appreciation मिलेगा, attention मिलेगा, maybe some trophies, maybe some promotions. At the same time, do not forget कि ये जो चीजें आप कमा रहे हैं, जो चीजें आपको मिल रही हैं, are they giving you that happiness forever, like for life, or is it just momentarily? Because pleasure और happiness में बहुत अंतर है. ये जो छोटी छोटी earnings होती हैं, they give you pleasure, but real happiness is inside when you are satisfied with what you are doing in your life. I hope you all are getting what I'm talking. In the end, when we have the Q&A, maybe we can have a bit of a discussion on whatever we are talking now. We feel and believe that if we slow down, then how will we succeed in life or achieve our goals? होता है ऐसा. डर लगता है कि अरे यार, कभी कभी ये भी डर लगता है, अरे यार ये नौकरी चलेगी तो मेरा क्या होगा, या मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा, या मुझे प्रमोशन नहीं मिला और मैं ये गाड़ी नहीं ले पाया फिर क्या होगा. ऐसे अजीब अजीब से सवाल अपने ही माइंड में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं. एंड हमें लगता है डर कि अगर मैं कहीं स्लो डाउन हो गया, या मैंने अपना जो पैटर्न बना रखा है काम करने का, बस काम ही काम, काम ही काम, अगर मैंने उसको स्लो डाउन कर लिया या बैलेंस करने की कोशिश की, तो कहीं मेरा काम में कोई इम्पैक्ट ना आ जाए, मेरी अर्निंग में कोई इम्पैक्ट ना आ जाए. गलत नहीं है, आप डर तो लगेगा, because you have so much of responsibility. You have your family to take care of, you have yourself to take care of, your children to take care of, your parents to take care of. डर तो लगेगा, but I can give you, I can write it on a stamp paper. No matter what happens, ultimately life still goes on. हमें डर लगता है, पर अगर हम उस डर का सामना कर लें तो वो डर लगना भी बंद हो जाएगा. I'll give you a small example of my life. There was a time I have also lived like this.
I used to have a very flourishing F&B business. Very, very busy. No time to relax at all. मतलब relaxation होता क्या पता ही नहीं था. 14 to 16 hours a day I used to work. Everything else of my life was ignored. बस काम, काम, काम और काम. Yes, I did it successfully. We made it possible from zero to probably $1 million business. But at the end, इतना काम करने के बाद, इतना स्ट्रेस लेने के बाद, इतना ज्यादा बॉडी और माइंड में फटीग आ गया that one day I crashed. And when you crash, everything else around you crashes. क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग्स आप ही से हैं, किसी और से नहीं. अगर आप ही क्रैश कर जाएंगे तो बाकी सब कुछ कैसे चलेगा? एंड इट हैपेंड विद मी. देन आई रियलाइज्ड कि ये मैंने क्या कर दिया. हाँ, उस वक्त एक एज होती है जब आपको जुनून होता है काम करने का. यार ये करना है, वो करना है, ये कमाना है, नाम कमाना है, फेम कमानी है, बहुत कुछ कमाना है. बट एट व्हाट कॉस्ट? कि एक दिन हम ऐसे बुरी तरीके से फटीग में पड़ जाएं, इतनी बुरी तरह बीमार पड़ जाएं कि हम कुछ और कर ही ना पाए. और ये क्यों हुआ? Because I did not know how to maintain a balance. I was only going one way. होता है वो तराजू है ना, एक तरफ वेट ज्यादा डालते जाओ तो दूसरी ऊपर चला जाएगा. Same thing. I kept on working, 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 working. And the other aspects of my life I couldn't take care of. But yes, life taught me a lesson. When I realized कि भाई अगर मैं ही ठीक नहीं हूँ तो मैं क्या कर लूंगी? ना काम कर पाऊंगी, ना ही फैमिली को संभाल पाऊंगी. That is when I started taking baby steps. I started going for meditation. I started doing some deep breathing techniques. I started doing a bit of yoga. थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से जंप करने की जरूरत नहीं. And when I started doing that, अपने आप एक थोड़ा सा बैलेंस आया. स्लो डाउन हुई लाइफ, पर कुछ हुआ नहीं. आज भी आई एम लाइव एंड किकिंग, doing very well in life, touch wood, by God's grace. Yes. So एक ये real life experience है, not just with me. I meet hundreds of people when I do my sessions. I listen to stories, I talk to them. And at some point of your life, you will realize this, that balance is the most important thing you must take care of, you must work upon. आसानी से नहीं होता, इस पे काम करना पड़ता है. All right. One second. Also, our what ifs will start crawling up. What if my earning will decrease? What if people will think I'm not doing well in life? What if my capacity to afford certain things will reduce? ये सारी fears हैं. Nothing will happen. Life will still go on, and probably in a much healthier and a balanced way. All you need to do is, first thing is to take a pause. Just take a pause. Just leave everything. होता नहीं, इसे drop कर दो, सब कुछ छोड़ दो, and just sit. Take a pause and think about it. Look at your life. What are you doing? How are you living it? Are you healthy? Are you really mentally, emotionally, physically happy? अपने आप को देखो. And अपने आप से पूछो कि is this the right way to live your life? You will get answers. Trust me, हम सबके अंदर answers हैं. बस इनको देखने की देर है. Take a look and decide a new pace for yourself. भाग भाग के एक दिन थकावट ही होगी, पर अगर एक कंसिस्टेंसी से छोटे छोटे स्टेप्स लेके एक बैलेंस लाइफ जिएंगे तो ना ही थकावट होगी, ना ही फटीग होगा, ना ही ब्रेकडाउन्स होंगे, ना ही क्रैशेस होंगे. Things will start moving on a smoother pace. All right. One more question. What is your aim or goal in life? I know you can't answer me right here. कहीं पे लिखें, सोचें.
क्या एम है लाइफ का, अल्टीमेट एम? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई गोल इज कि मेरे को अगले महीने तक एक मर्सिडीज खरीदनी है, या मेरा गोल है कि मुझे अगले महीने पेरिस जाना है, या मेरा गोल है कि मुझे एक लुई वुइटन का बैग लेना है. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज गोल्स एंड एम्स इन लाइफ. द ultimate core goal in life, what is it? Think about it. Isn't it to be happy? Is there anybody here who can say ki nahi, my aim in life is to be sad, my aim in life is to be angry, my aim in life is to always cry or crib? है कोई ऐसा यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो. अल्टीमेटली हम सब जो भी लाइफ में कर रहे हैं, वेदर इट इज आवर वर्क, वेदर इट इज आवर पर्सनल लाइफ और वट एवर, अल्टीमेटली हम पाना क्या चाहते हैं? दैट इज हैप्पीनेस. वी ऑल जस्ट वांट टू बी हैप्पी, टू बी लव्ड, टू बी हैप्पी, isn't it? Are you happy right now? Are you happy right now at this moment? आज की डेट में जो आप लाइफ में कर रहे हैं, क्या आप खुश हैं? Or what makes you happy? If you are not happy right now and you think about it, yeah, I'm not happy, what will make you happy? Think about it. Like for me, the happiest time for me is when I'm on stage, when I'm doing my workshops, when I'm talking to people, when I'm discussing life problems and we are finding solutions and working on life skills. Or the the most happiest place for me is when I'm in front of the camera, giving a shot, playing a different character. That is real happiness for me. जब वो असली खुशी वो होती है जब आप 24 घंटे भी काम कर लो, आपको थकावट ना हो. That is real happiness, where you don't feel tired, you really love doing something. That is real happiness. So please find an answer. Are you happy right now? If not, then what makes you happy? Make notes. How we choose to live our life depends on us, isn't it? Is it true or false? हमारी लाइफ कैसी है? यस, आप बोलेंगे कि भाई हमारी लाइफ तो आधी चीजें तो हम खुद चूज कर ही नहीं पाए, बिकॉज शायद हमारे करियर की चॉइसेस हमारे पेरेंट्स ने की, या सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ, जो भी हुआ. अल्टीमेटली आज की डेट में जो आप हैं, वो आप इसलिए हैं क्योंकि आपने वो फाइनली चूज किया, चाहे जबरदस्ती में किया, चाहे प्रेशर में किया, पर किया. राइट? सो वी make choices and based on our choices we live our life. उसी पे सारी चीजें डिपेंडेंट है. आज की डेट में if I choose to live an unhealthy life, I keep eating junk food and I don't exercise and I'm always on a gadget, तो क्या होगा? My choices make my life. I will lead an unhealthy and an unhappy life, right? Versus अगर मेरी choices हैं कि भाई मैं अपने डेली रूटीन में XYZ चीजें करूंगी जो मेरी हेल्थ के लिए जरूरी है, मेरी खुशी के लिए जरूरी है, तो मेरी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि मेरी लाइफ कैसी होगी. बाकी तो कुछ चीजें तो खैर डेस्टिनी है, यू रियली कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ, बट एटलीस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ, जिसके ऊपर आपकी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है. So based on all this discussion that we have done till now, what I have spoken till now, in sub mein, who is the most important person in your life? I'm sure you must be thinking maybe my mother, my father, my daughter, my son, my wife, my girlfriend, my boyfriend. सबसे पहले दिमाग में यही सब आता है. But my question is, who is the most important person in your life? कि अगर वो ना हो तो आपकी जिंदगी ना रहे. Isn't that you? Right? अगर आप ही नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी खत्म. The most important person in your life is you. The most important person in my life is me.
If I am not okay, nothing around me will be okay. Do you all agree? Right? If you want to bring about a change in your lives, where would you start from? कहाँ से शुरुआत करेंगे? अपने आप से. Because the balance begins with you. वो लाइन है ना, charity begins at home, right? तो ये भी एक तरीके की चैरिटी ही है जो हमें अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए करनी बहुत जरूरी है. You have to take care of yourself so that you are able to take care of your loved ones. Self-love, self-care. Make yourself a priority also. I'm not saying कि सिर्फ अपना ही ध्यान रखें, सिर्फ अपने आप से ही प्यार करें, सिर्फ अपना ही केयर करें. No. Apart from just taking care of others will not lead you anywhere in life. You must begin from yourself. इसके लिए एक छोटा सा डेमो करते हैं. I have this water bottle and I have a glass. All right, खाली है. फुल हो गया. चलिए एक और ग्लास लेते हैं. फुल हो गया. तीसरा ग्लास. पानी खत्म. The water is over. अब मैं अगर कोशिश करूं कि भाई इसमें थोड़ा सा और निकाल लेते हैं, प्रेस करते हैं, नहीं निकल रहा. इट्स टोटली एम्प्टी. एक छोटा सा डेमो है to explain it to you. This empty bottle is you, me, all of us. What we do in our life is कि हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते, बाकी सबका ध्यान रखने में बिजी रहते. अच्छी बात है, हमारे संस्कार है, बहुत बढ़िया बात है, करना भी चाहिए. बट अगर आप खुद ही एम्प्टी हो गए तो आप दूसरे को कहाँ से पानी पिलाओगे? If this is you and you are constantly doing things for others, taking care of others, doing work for others and doing nothing for yourself, आप भी एक दिन ऐसे ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे. पूरी की पूरी बोतल खाली. फिर क्या होगा? योर लव्ड वंस जिनको आपने फिल किया था उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. ये अरे अब तो ये कुछ करते ही नहीं हमारे लिए. क्यों? कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी बोतल खाली हो चुकी है. अब सवाल ये है कि इस खाली बोतल को भरा कैसे जाए? सिंपल सी बात है भाई, टैप पे जाइए, टैप ऑन करिए, पानी भर लीजिए. और अगर ये मैं हूं या आप हैं, हाउ विल यू फिल योरसेल्फ? Any answers in your minds going on? By taking care of yourself. Taking care of your emotional, mental and physical health. Easiest way अपने आप को भरने का, अपने आप को फुल रखने का, meditation. That is the answer. Because basically क्या हो रहा है? You are draining out yourself of all your energy. चाहे वो एक मेंटल फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे इमोशनल फॉर्म में हो. कॉन्स्टेंटली व्हेन यू आर गिविंग, उतना ही देंगे जितना आपके पास है. एक पॉइंट आएगा व्हेन यू विल हैव नथिंग टू गिव. देन व्हाट विल यू डू? देन यू नीड टू फिल योरसेल्फ विद दैट गुड एनर्जी, एंड दैट विल कम from doing meditation, doing something that you love doing. It could be any kind of passion. गाना गाना, writing करना, books पढ़ना, walk पे जाना, दोस्तों से मिलना, dance करना, कोई भी एक ऐसी चीज. Any one passion that gives you that happiness.
Because when you do something like that, और जो आपको वो खुशी मिलती है वो आपको फिर से भरती है, वो आपको एक एनर्जी देती है, और जब आप उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तब आपके पास एनर्जी, आपके पास वो सब्सटेंस जो अंदर खाली हो गया था वो भरता है, तभी आप दूसरों को वो चीजें दे पाते हैं. नाउ अगेन, इफ यू थिंक अबाउट इट, कहीं ना कहीं ये बैलेंस की ही बात हो रही है. एक है कि बस दूसरों की केयर करते रहे, अपनी नहीं की, imbalance हो गया, right? So there also you need to create a balance. You must take care of yourself if you want to take care of others in your life. To live a happy life, maintain a good balance between mental, emotional, and physical health, your work and your home life, your relationships with others and with yourself. How is your relationship with yourself? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिन में अपने आप को 100 बारी कोसते हैं? अरे यार, आई एम एन इडियट, ओ माय गॉड, आई एम सो स्टूपिड, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा तो दिमाग ही खराब है, मैं क्यों करती हूँ ऐसा बार बार, व्हाई डू आई डू दिस, आई एम नॉट केपेबल यार, आई एम नॉट गुड इनफ, नोबडी लाइक्स मी, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू टॉक टू योर माइंड लाइक दिस? मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऊंचा बोल के ऐसी बातें करते हैं, माइंड में चल रही है ये बातें constantly. Do you know what this kind of self-talk does to you? कैसी रिलेशनशिप है आपकी अपने साथ, वो ये बताता है. अगर आप एक्सटर्नली, आपका कोई फ्रेंड है, राइट, आपका बेस्ट फ्रेंड है, और आप उसको कॉन्स्टेंटली बोलते रहे, यार तू बेवकूफ है, तेरा तो दिमाग खराब है, यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, यू हैव नो सेंस, यू आर नॉट गुड इनफ, हाउ विल यू फ्रेंड फील? क्या वो फ्रेंड आपके पास ज्यादा समय तक के लिए टिकेगा या भाग लेगा? आंसर इज क्लियर. आप अपने आप के साथ ऐसा क्यों करें? हम अपने आप को क्यों इतना कोसते हैं? Why do we do bad and ill self-talk? That if you start changing to positive things about yourself, कमियां सब में होती हैं, बट अगर हम इतनी इल सेल्फ टॉक करेंगे तो हमारी रिलेशनशिप हमारे अपने आप के साथ ठीक हो ही नहीं सकती. Again, charity begins from home. If you have a good relationship with yourself, then you will have a good relationship with everybody in your life. क्योंकि आप अपने आप के साथ खुश हो, आप अपने आप के साथ satisfied हो. जब तक अपने आप के साथ satisfied और खुश नहीं होगे ना, आप लाइफ में किसी के साथ खुश नहीं रह सकते. You will always be cribbing, you will always be complaining, you will always be looking for something better. Maybe it's not making sense to you right now, but I would really urge that after this session, try and remember these words and think about it. Isn't it true? And if you bring about that small change, start loving yourself. Why can't you love yourself? इतने बुरे तो नहीं हो आप, right? अपने आप को प्यार करने में शर्म कैसी? अपने आप का ध्यान रखने में शर्म क्यों? Why? It shouldn't be like that. सबसे पहले अपना ध्यान रखना शुरू करें, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने इमोशंस के लिए. बाकी की चीजें अपने आप सही जगह पे आनी शुरू हो जाएंगी. Balancing your time for yourself and others. Again, we have discussed this. So bringing about a balance in your personal life and your professional life. Personal life में different areas हैं जहाँ पे आपको अपना ध्यान रखना है ताकि आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने लव्ड वंस, अपने दोस्तों का, अपने बच्चों का, अपने कोलीग्स का, सबका ध्यान रख सके. Tips for self-care and self-love. All right. These are small tips that I'm giving you. Take baby steps. एकदम से कूद पड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी वो ब्रेक हो जाएगा. So I believe in taking small baby steps. Then only you will reach a certain destination in your life. Start your day with something positive. Something positive could be anything that you love doing.
एक अच्छी अदरक की चाय बनाई, या अपने गार्डन में, अपने बालकनी में प्लांट्स के पास थोड़ी देर बैठे, आंखें बंद कर ली, ब्रीदिंग करी, मेडिटेशन करी। मेडिटेशन भी आई विल बी टीचिंग यू अ स्मॉल टेक्निक ओवर दिस सेशन। मेडिटेशन बहुत अलग अलग लोगों ने बहुत अलग अलग किस्म से, कुछ लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन करा है, कुछ लोगों ने बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करा है। आई एक्सप्लेन इट इन अ वे विच इज इजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो जिनके पास टाइम की कमी है, जिनको बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आई विल बी टीचिंग दैट टेक्निक विच यू कैन डू एनीवेयर एट एनी टाइम। ऑलराइट, प्रैक्टिस हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स में क्या है भाई? हेल्दी आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं ऐसी जो आपको एक गुड हेल्थ दे? वन इज ईटिंग good food, healthy food, and balance it by eating less junk food. हमारे आजकल एनवायरनमेंट में चारों तरफ इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल हो गई हैं, टेस्टी भी होती हैं, तो बस मन तो करता है कि यार आज फ्रेंच फ्राइज खा लो, आज पिज्जा खा लो, आज ये खा लो, आज वो खा लो। पता है कि इट इज नॉट गुड फॉर अस, बट इवन देन वी ईट इट। वी ईट इट बिकॉज वी डोंट नो व्हाई आर वी डूइंग दिस। स्ट्रेस है यार। आई जस्ट वांट टू स्ट्रेस ईट, आई जस्ट वांट टू बिंज ईट। ऑल दीज एक्सक्यूजेस वी हैव, राइट? बट बीइंग अवेयर कि नहीं भाई ठीक है, आज मैंने पिज्जा खाया, अभी मैं शाम को हेल्दी कुछ खाने वाली हूँ। अगेन मेंटेनिंग अ बैलेंस, अपार्ट फ्रॉम जस्ट eating right or eating in a balanced way. There's something very important which we are not doing. What we are feeding to our mind. Are we feeding negative thoughts all the time? Or do we have a balance between negative and positive? It cannot be purely positive. Possible नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव होने के लिए नेगेटिव का होना जरूरी है। तो ये हो नहीं सकता कि आप 24 घंटे पॉजिटिव रहें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अननेचुरल हो जाएगा, सुपर नेचुरल हो जाएगा। मे बी कोई बहुत बड़े योगी हों जो आफ्टर इयर्स ऑफ मेडिटेशन who attain that kind of bliss, but it's not easy for a common man like us. Make time for activities and passions that soothe you. Like for me, I love dancing and I love singing. So I make sure, not if not every day या alternate day, गाने तो मेरे यहाँ हर वक्त चलते हैं। I could just play music all the time background में। तो जब म्यूजिक चल रहा होता है, it just soothes you. It just soothes you down. Nice, good, happy music. It just changes your mood instantly. कभी मूड खराब हो, अच्छे से प्यारे से गाने चला लो, एकदम फिट हो जाता है मूड, राइट? म्यूजिक रियली वर्क्स वेरी वेल। हो सकता है आप में से किसी के लिए राइटिंग वर्क करती हो, किसी के लिए रीडिंग वर्क करती हो, किसी के लिए वॉक वर्क करती हो, कुछ भी हो सकता है। सो मेक टाइम फॉर सच एक्टिविटीज इन योर डेली रूटीन। टेक ब्रेक्स विच नॉर्मली वी फॉरगेट टू टेक। हमें लगता है अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं यार अभी नहीं कर सकते, मीटिंग है, वो आई हैव टू प्रिपेयर दिस, आई हैव टू डू दैट। ठीक है, मीटिंग्स हैं, डेडलाइंस हैं, फाइन, बट एक रेगुलर डेली रूटीन में, जो एक ऑफिस का रूटीन होता है, उसमें यू मस्ट मेक श्योर दैट यू टेक ब्रेक्स। इवन इफ यू टेक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स चलेगा, बट यू मस्ट इनकॉर्पोरेट सम ब्रेक्स। अगेन घूम फिर के बात आ जाती है बैलेंस पे। काम करते करते बीच में थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए छोटा सा ब्रेक। शेयर एनी स्ट्रेसेस with your friend or a trusted mentor or a colleague. It helps to share and discuss possible solutions. बहुत से लोगों को डर लगता है लोगों पे ट्रस्ट करने में। होता है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, दे फील कुछ शेयर किया तो फैल जाएगी बात, या ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। फाइंड somebody in your life, look for somebody whom you can trust, that one person, and कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है लाइफ में, अंदर ना रख के यू मस्ट ट्राई एंड डिस्कस इट विद दैट वन पर्सन। इस पे आपको पूरा भरोसा है। सेट बाउंड्रीज टू सेफ गार्ड योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। बाउंड्रीज बनाना हम इंडियंस के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
अब पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें हमारे संस्कार, हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके भी पेरेंट्स, कहाँ से ये चलता आ रहा है ट्रेंड कि ना नहीं बोलना, कभी किसी को मना नहीं करना किसी काम के लिए। किसी ने कुछ भी बोला ना, तुम्हें उठ के ये काम करना है, ठीक है, चाहे तुम्हारी तबीयत सही हो नहीं हो, बेटा अपने बारे में बाद में सोचना, पहले उनके लिए काम करो। वो बड़े हैं, वो तुमसे बड़े हैं, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी बहन है। मतलब बेसिकली आप करने की सिचुएशन में नहीं हो, आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, आपका शायद इमोशनल स्टेट उस वक्त ऐसा नहीं है, पर आपको ना नहीं बोलना है। बिकॉज इट इज ड्रिल्ड इन अस कि अगर हमने ना बोला तो हम एक बुरे इंसान बन गए। आई डोंट थिंक दैट्स दैट्स अ फैक्ट। नो, इट इज नॉट। ना बोलना इज नॉट अ क्राइम, एंड ना बोलना बहुत जरूरी है। बस इस चीज पे मैटर करता है कि आप ना किस तरीके से बोल रहे हैं। भाई ना बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। एक तरीका है, आई एम नॉट डूइंग दिस, ओके, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, मुझे नहीं करना ये काम, जस्ट गेट लॉस्ट, आई विल नॉट डू दिस फॉर यू। एक तरीका है ये ना बोलने का। इसी चीज को हम पोलाइटली भी बोल सकते हैं। सपोज अभी मुझे आके मेरे किसी कोलीग ने बोला, या मेरे शायद पेरेंट्स ने, किसी ने आके मुझे बोला है कि प्लीज अभी जाओ, तुम ये जाके फटाफट ये काम फिनिश करके आओ, और मेरी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है, आई एम टोटली ड्रेन्ड आउट, आई रियली डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी राइट नाउ टू डू दैट। आई कैन से इट पोलाइटली, आई कैन से आई एम रियली सॉरी, अभी नहीं हो पाएगा मुझसे, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, और आई एम नॉट फीलिंग अप टू इट, कैन आई प्लीज डू इट टुमारो? आई विल डू इट, बट आज नहीं हो पाएगा। सेम चीज थी, सेम ना थी, एक रूड थी, एक ब्लंट थी, और एक पोलाइट थी एंड अ फर्म थी। यू कैन बी assertive, be polite, and be firm. It's not easy to say no, but when you take that baby step, पहली ना बोलने में बहुत डर लगता है। I have gone through it. I have lived a life where I could not say no to anyone, चाहे वो मुझसे छोटा हो, बड़ा हो, मेरे बराबर का हो, कोई भी हो, ना बोलना नहीं आता था। एंड आई यूज्ड टू ड्रेन आउट माई सेल्फ, काम कर करके ना नहीं बोल सकते भाई, नहीं, बहुत बुरे बन जाएंगे हम। अगेन व्हेन आई रीच्ड दैट पॉइंट व्हेन आई वाज सो ड्रेन्ड आउट कि सच में ही एनर्जी अब बची ही नहीं थी, आई वाज एक्चुअली बेड रिटन फॉर फ्यू मंथ्स, आई कुड नॉट गेट अप बिकॉज आई वाज इन अ सिचुएशन वेयर आई वाज लिटरली फोर्स्ड टू वर्क। पर अब जान नहीं थी शरीर में, ना ही माइंड में, ना बोलना ही पड़ा, और कोई तरीका था ही नहीं। And I still remember that day when I said that first no. I had somebody by my side, and if we want to achieve something in our life ना, ऊपर वाला कोई ना कोई भेज देता है हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। I got that courage and I said my first no. बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, क्या होगा इसका रेपरकशन, माय गॉड मेरे को काम नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। यस, डर लगा, उसको फेस किया, एक बारी ना बोली, पोलाइटली, असर्टिवली, फर्मली, एंड देन उसके बाद आई न्यू हाउ टू हैंडल इट, आई न्यू हाउ टू कंट्रोल माय माइंड, एंड आई न्यू हाउ टू टेक चार्ज, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बाय डूइंग दैट। देन सेटिंग दैट बाउंड्री, यू मस्ट सेट दैट बाउंड्री कि भाई ऐसा नहीं है कि यार जब जी में आया कुछ भी करा लिया, कुछ भी कर लिया, नहीं, देयर हैज टू बी अ बाउंड्री। हर चीज की एक सीमा होती है, और लाइफ में अगर हम ये सीख लें तो हमारा जो बैलेंस है मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ का, अपने आप चीजें एक जगह पे सेट होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, आस्क फॉर हेल्प। अगर कोई परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ वेयर यू रियली डोंट नो कि अब क्या करें, कैसे होगा ये। आस्क फॉर हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प, फ्रेंड्स की हेल्प, फैमिली की हेल्प। हेल्प मांगने में झिझकना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे if we ask for help. Trust me, it's not like that. When you ask,
then only you will get. Right? कहते हैं ना, यूनिवर्स से जब तक कुछ मांगोगे नहीं मिलेगा नहीं. ऐसे ही तो यूनिवर्स की तो पार्ट है हम सब. You must ask for help. Enjoy your physical space. Make your workplace comfortable for yourself. जिस जगह पे आप काम करते हैं, जहां आप रोज घंटों बैठते हैं, उस जगह को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है. You must feel good when you walk and you go to your office desk. You should feel nice. Wow, yes, this is my table. I'm going to work over here. या उसके जो भी केबिन है आपका या क्यूबिकल है या रूम है, उसको उस तरीके से डेकोरेट करिए, उस तरीके की कुछ चीजें वहां रखिए जिससे आपको खुशी मिले, देख के अच्छा लगे, यू फील कंफर्टेबल. हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ, जो नॉर्मली हम नहीं रखते. हमें लगता है अरे हम सब कर लेंगे यार, बहुत है, बड़ी हिम्मत है, बहुत जोश है, बहुत एनर्जी है. अगेन यू विल be fatigued, you will just stress out, your body will stress out, after a while it will not function. तो अपने आप से थोड़ी सी सोच समझ के expectations लगाइए, because again self care and self love is very important. Be patient and gentle with yourself. अब इसका क्या मतलब है, be patient and gentle with yourself? हम कोई अपनी पिटाई तो कर नहीं रहे, राइट? फिजिकली तो नहीं कर रहे, बट हमने कुछ देर पहले ये पॉइंट डिस्कस किया था. We tend to curse ourselves, we tend to abuse ourselves by saying things like I'm not good enough, I'm very bad, I'm not good at this, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरा तो दिमाग ही खराब है, मैं तो हुई stupid. क्यों? Just be gentle with yourself. अपने आप, most important person in my life, at least be nice to that person. Maintain a balance in your day-to-day life. Tips for work-life balance. Again, correcting this term work-life balance. Tips for maintaining a balance between your personal and professional life. Again, most important point here is set clear boundaries. Establish specific work hours and stick to them. Avoid working beyond your set time to protect your personal life. मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कैसे होता था. Yes, it was easier for them. I understand. हमारे लिए मुश्किल है, but impossible नहीं है. Prioritize your tasks. Just 1 second. Prioritize your tasks. Focus on what's most important, both at work and at home. Use to-do lists or time management techniques like Eisenhower matrix to prioritize tasks. Now, हम अगर इस तरीके से काम करते हैं जब हमें पता ही नहीं है, मतलब 10 काम है हमारे पास और पता नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है और कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है, वी जस्ट जम्बल अप, लाइक दिमाग में सब खिचड़ी बन जाती है, वी डोंट नो व्हाट टू डू. एंड देन अल्टीमेटली होता क्या है, 10 में से 5 काम भी नहीं होते. एंड देन वी फील अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. सो द बेस्ट वे इज मेक अ लिस्ट that this is most important, second important, third important, fourth important, fifth important. And then plan your day accordingly or plan your list accordingly and then tick karte jaएं एक एक काम करके. You will feel way more sorted and balanced. Learn to say no. Very important. We just talked about it. Don't overcommit. Lot of us have this habit of overcommitting. अभी आपको आके किसी ने काम बोला. Suppose you have, obviously in offices we have an hierarchy. Immediate boss ने काम बोला, हाँ सर सर पक्का, हाँ डन डन डन, अरे 10 मिनट में I'll do it सर, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, नो 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 वरीज. इतने में कोई और आया, उन्होंने आपको कुछ काम बोला, अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस अभी बस वही कर रहा था, अभी अभी आई एम डूइंग इट राइट नाउ, हो जाएगा हो जाएगा. थर्ड पर्सन कम्स एंड अगेन, हाँ सर हाँ 1 घंटे में इट विल बी डन, डोंट वरी, यस 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. ये क्या करा आपने? ओवर कमिट कर दिया. क्या आप 3 टास्क्स विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मिनट्स कर सकते हो? अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, कोई प्रेपरेशन है, कुछ आई डोंट नो प्रेजेंटेशन, कुछ भी काम हो सकता है. आपको कहीं ना कहीं मालूम है आप कर नहीं पाओगे, बट
बस दूसरे को खुश करने के लिए एक आपने हाँ हाँ तो बोल दी, राइट? यू ओवरकम इट. Will you be able to really deliver it? It is very risky to do this because what happens, उस मोमेंट में आपने हाँ बोल दी. What if you're actually not able to do it? Then you get a bad name. फिर आपको गाली पड़ेगी. अगला बोलेगा अरे तूने तो बोला था ये करने, तो you will do it. Why haven't you done it? And then you don't have an answer because you have overcome it. So be very mindful. Don't overcome it. Be mindful of your limits and don't be afraid to decline additional responsibilities that might overwhelm you. You must know कि भाई इतना ही कर पाऊंगा मैं आज या कर पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं हो पाए. You must be able to gauge that. मेरे पास इतने ही घंटे हैं, उतने घंटे में मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं हो. सेम थिंग अप्लाइज एट होम ऑल्सो, राइट? आप घर जाते हैं काम से और घर में सब एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं कि अरे अभी ही विल कम और शी विल कम, देन विल गो आउट, या हमें शॉपिंग करनी है, अभी घर के लिए सामान लेना है, ग्रोसरी लेनी है, ये लेना है, वो लेना है. और आप क्या करते हैं, घर पहुंचते हाँ अभी बस मैं चेंज कर रहा हूँ या मैं अभी चेंज कर रही हूँ, ला लेट्स गो. जान नहीं है बॉडी में फिर भी कर रहे हैं. डोंट डू दैट. दैट इज वेयर सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव कम्स इन. यू कैन से प्लीज अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं 1 घंटा रेस्ट कर लूं, उसके बाद सोचते हैं. ये भी नहीं किया उसके बाद चलते हैं, उसके बाद सोचते हैं, देन वील गो. यू कैन डू इट समटाइम्स व्हेन यू हैव द एनर्जी, बट व्हेन यू डोंट देन डोंट ओवरकम इट. और ये ना बोलने वाली जो चीज है ना, एक बारी मास्टर कर ली ना आपने, पर प्यार से, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी को हर्ट किए, बिना रूडली बात किए, ना बोलना अगर सीख लिया, ट्रस्ट मी योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज लाइक magic. Delegate and share responsibilities. Delegate work tasks when possible and share household responsibilities with family members to reduce your load. सेम वही बात है होम सेटिंग में. और एक ये जो डेलीगेशन होती है ना काम की, हमें कई बार डर लगता है कि हमने अगर अपने ऑफिस स्पेस में अपना काम किसी और को डेलीगेट कर दिया तो वो मेरे हाथ से काम निकल ना जाए. ऐसा नहीं होता है. सबकी एक पोजीशन होती है, घर में भी काम पे भी. Nobody can take your space and neither can you take anybody's space. जो काम आप करते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता और जो दूसरा करता है वो आप नहीं कर सकते. Not necessary, right? So don't be scared in doing that. You must learn how to delegate work and share your responsibilities. Unplug regularly. Take time away from technology. This has become like a drug in today's world. Everybody is so addicted. We all are so addicted to this information, to the technology. इतनी ज्यादा फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन जो चल रही है हमारी लाइफ में. डिस्ट्रैक्शन, बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन आवर लाइफ्स. और कुछ नहीं है करने को, फोन उठाया, इंस्टाग्राम रील्स देखनी शुरू कर दी. वी हैव नथिंग एल्स टू डू. आई मीन यूट्यूब खोल के आप देखना शुरू कर दिया, फोटोज देखनी शुरू कर दी, फेसबुक देखना शुरू कर दिया. No, it is a sheer waste of time and your energy, and it is hampering you. It is actually damaging your eyes, your mind. सारी की सारी चीजें अंदर ही अंदर धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं, which we're not even realizing. Disconnecting from emails and notifications outside of work hours help reduce stress and burnout. You could figure out a way कि अगर कुछ बहुत ही urgent है, राइट, समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं किया तो ब्लंडर हो जाएगा ऑफिस में, उसके लिए एक अलग कोई व्हाट्सएप पे कुछ नोटिफिकेशन या एक अलग ईमेल आईडी, वेयर यू नो इफ समथिंग इज रियली अर्जेंट यू वुड आइदर रिसीव अ फोन कॉल और अ मैसेज. हैव दैट डिमार्केशन इन दैट. हम क्या करते हैं, 24 घंटे हमारे पास फोन में अवेलेबिलिटी है, तो चलो अब और कुछ नहीं है, चलो ईमेल ही चेक कर लेते हैं. अभी हम बोर हो रहे हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं. ईमेल चेक करनी शुरू करी, बीच में कोई इंपॉर्टेंट ईमेल आ गई, अरे बाप रे ये तो भी करना है, ओ माय गॉड. अब हो भी सकता है वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो भी सकता है वो काम आप कल कर सकते थे, बट वो अब एक स्ट्रेस बन गया. सो यू विल सिट डाउन एंड स्टार्ट डूइंग दैट वर्क. अगेन बैलेंस इज गॉन, राइट? प्रैक्टिस सेल्फ केयर.
Regularly engage in activities that rejuvenate you, whether it's exercising, meditating, reading, or pursuing a hobby. Take breaks throughout the day. Incorporate short breaks during your workday to reset your mind or improve your productivity. जब हम माइंड को रीसेट करते हैं, when we take small pauses, we somehow fill up that empty bottle. हमारी वापस से एनर्जी रिजुविनेट हो रही होती है. We are building ourselves up. For example, जब एक फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है पूरी तरीके से, हम क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए उसको प्लग में लगा के छोड़ देते हैं, राइट? फोन चार्ज हो जाता है. Then again it starts working. It's the same thing with us. When we are working, बीच में छोटा सा ब्रेक लिया, अपने आप को रिचार्ज किया, कुछ ना करके. When we do nothing is the time when we are recharging ourselves. बस recharge yourself and get back to work. You will become more efficient. Flexible work options. If possible, explore flexible work arrangements like remote working or flexible hours to better accommodate your personal life. Now, all these tips contain self-care, self-love, and maintaining a balance in your work and personal life. So all these tips come together because ये सारी चीजें intertwined है, interconnected है. कोई भी चीज किसी से अलग नहीं है. Set time for family and friends. Prioritize quality time with loved ones, which can help maintain personal connections and provide emotional support. Excuse me. Plan and organize. Use a planner or calendar to organize both work and personal activities. Planning ahead helps reduce last-minute stress and gives you a better sense of control. When we plan something, जब हमारी मीटिंग scheduled होती है, plan बना हुआ होता है, don't you feel more sorted? In the same way, you can do that for your personal life as well. Plan करके कि हाँ, these are the things which need to be done. We will do this. Plan activities, maybe weekly or monthly or however you want to do that. Maintaining a balance in life is all about setting boundaries, prioritizing well, and ensuring you take care of yourself mentally and physically. All right. Okay. So before we move on to this next point that we're going to talk about, before going on a stress exploration journey together, let's do a short meditation. This you can either do for a minute or 2 minutes or 5 minutes, depending on the time you have. Now, what it does is basically it disconnects you from everything else and it fills up your empty bottle. करना क्या है? चाहे आप कहीं पे भी हैं, काम पर हैं, गाड़ी में हैं, I would say do not do it in a moving vehicle. Like even if you're sitting with a driver, don't do it. Sit somewhere which is fixed, like chair, bed, zameen, kahin pe bhi baithe. All you need to do is sit, keep your palms upwards, put them on your thighs comfortably. Close your eyes and you just have to concentrate on your breathing. Now, for some of us, it is very easy to concentrate on breathing. And for some of us, it is very difficult. तो जिनके लिए मुश्किल है, उनके लिए छोटा सा solution है. When you inhale, you count 1, first breath. You exhale, you say 2. Inhale, 3. Exhale, 4. 5, 6. 7, 8. So what you're doing is जितनी बार आप सांस अंदर ले रहे हैं, आप एक काउंट कर रहे हैं, exhale कर रहे हैं, next काउंट कर रहे हैं. बस, that is all what you need to do with your eyes closed, and you must make sure अपनी काउंटिंग को भूलिएगा मत. Try to remember the number of breathings you have done. Okay, I will put a timer and
you note down the number. तो जितने कम numbers होंगे means उतनी ही ज्यादा आपकी deep breathing थी. जितने कम numbers होंगे उसका मतलब आपकी deep breathing उतनी ही shallow थी. Understood? I'll show it to you once and then we will start. So hands like this, put them on your thighs, sit straight, close your eyes, and now watch before we start. Inhale from your nose, exhale from your mouth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Like this. All right. I'm going to put a timer and we shall start this for 1 minute. सब लोग please अपनी आंखें बंद करें. And when I will give the last instruction is when you will slowly open your eyes. I will do the guided meditation bit over there as well. All right. So your time starts now. Slowly move your fingers. Don't open your eyes yet. धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाइए. Then rub your palms. Generate some heat on your palms. जिन लोगों ने चश्मा पहना है, please remove your specs and put your hands on your eyes. Slowly, very, very, very slowly open your eyes. At the end of the session, I would love to hear from you कि meditation करने के बाद कैसा लगा. And इससे related अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. All right. Maybe take a sip of water before we move forward. All right. Now let's go on a stress exploration journey. What is stress? Stress is a natural human response to challenges and threats in life, such as difficult situations, events, or that cause feelings of frustration, anger, or nervousness. It can be a state of worry or mental tension that causes physical, emotional, and behavioral responses. आज की डेट में each and every person uses this word so easily, so commonly. Oh my God, I'm so stressed. Oof, my stress levels are so high. I'm stress eating. I'm stress drinking.
I can't sleep because I'm stressed. But why? Why are we so stressed? What is the real reason? To be honest, reason is that we don't have a balance. We don't have a balance in our lives. We have completely lost it. And that is why stress is happening. क्योंकि challenges or threats तो आते ही रहेंगे. They are not going to stop. Now, a person who is balanced, a person who is, mentally controlled, या अंदर से calm, अंदर से irritated या frustrated नहीं. Don't you think those people can face or handle challenges and threats in life more peacefully, in a much better way, without getting stressed? Yes. So that is only achievable if you are at peace here and here. And to bring about that peace and balance, what we just did, a micro mini meditation, you can start with this and slowly, slowly, slowly increase your duration. Like I do it 15 minutes in the morning, 15 minutes at night. All you need to do is close your eyes and just breathe. और कुछ नहीं करना है. Thoughts आएंगे जाएंगे, problems आएंगे दिमाग में, questions आएंगे, incidents आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी. आने दो. Let it come, let it flow, let it come, let it come. Slowly, 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 over a period of time, they will start vanishing. धीरे धीरे कम होता जाएगा. And there will come a point, you will reach a point where you will be blank. And that is the state you want to achieve. All right? You can start today. I never believe in saying, I'll start it tomorrow. Tomorrow never comes. Start it today, bit by bit, small baby steps, doing something every day that you love, that gives you happiness, doing something for your health, for your physical and emotional health. Physical health के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना, junk food जितना कम हो सके उतना कम खाएं. And again, now we talk about physical food. Now we talk about mental food. What are you feeding your brain every day, every minute? That will create the real balance in your life. सिर्फ हेल्दी खाना खा लिया पर यहाँ अपने माइंड को आप नेगेटिव चीजें फीड कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं. वो जो खा रहे हो वो भी नहीं लगेगा. राइट? ऐसा होता है. Now, how many of you feel stressed on a daily basis? We've just talked about it. Almost everybody. What are the stresses in your lives? Let's see. Name a few. Work-related stress, high workload and deadlines, constant pressure to meet tight deadlines and manage heavy workloads can cause chronic stress. Job insecurity, concerns about job stability, layoffs, or career progression contribute to anxiety. Work-life imbalance, personal life, professional life imbalance, difficulty balancing between professional commitments and personal life can lead to a burnout, like you don't have energy at all. Remote work challenges, the blurred lines between work and home life, isolation, and managing time efficiently while working remotely add stress. Financial stress, cost of living, rising living costs, housing expenses, and inflation put a strain on finances. Debt, credit cards, credit card debt, student loans, or mortgages can create financial anxiety. Uncertainty about the future, worries about savings, retirement, and unexpected expenses, and they add to the financial burden. Health-related stress, mental health issues, anxiety, depression, and burnout are increasingly prevalent due to societal pressures and modern lifestyles. Physical health problems, chronic illnesses, or concerns about staying healthy in a fast-paced world can be a significant stressor. Pandemic aftermath. The lingering effects of COVID-19, both physically and mentally, continue to affect many of us. Social and relationship stress.
Relationship struggles, conflicts in personal relationships, including marriage, friendships, or family dynamics, can cause emotional distress. Social isolation. Feelings of loneliness, especially post pandemic, are contributing to stress and mental health challenges. सोशल मीडिया प्रेशर, मतलब और कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में तो सोशल मीडिया का प्रेशर ले लिया. How easy it is to get stressed. Constant exposure to curated images of others' lives creates unrealistic expectations and feelings of inadequacy. होता है ना ये हमारे साथ. When we go on social media, कोई अपनी सैड फोटो तो डालेगा नहीं ना सोशल मीडिया पे. पब्लिक में कोई अपना सैड फेस दिखाता है क्या? या कोई बाहर जाके सड़क पे जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, अरे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अरे मेरी वाइफ से रोज लड़ाई होती है, अरे मेरे बच्चे मुझसे रोज लड़ते हैं, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, मेरी तो लाइफ बिल्कुल ही बर्बाद है. डू यू एक्चुअली डू दैट? नो, nobody will do that. People only want to show आई एम वेरी हैप्पी, मेरी लाइफ तो परफेक्ट है, तुम्हारी कैसी है मुझे नहीं पता, मेरी लाइफ तो परफेक्ट. अब उसने अपनी परफेक्ट लाइफ की एक फोटो डाली सोशल मीडिया पे, आपने उसको बिलीव कर लिया, आपको लगा वाओ यार इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, मेरी लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. अब उसके साथ आपको compete करना है. एक अजीब सा प्रेशर बिल्ड हो गया, टेंशन भी हो गई कि वो तो बड़ा खुश है, मैं खुश नहीं हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. It is all a mask. It is all a facade. We all are living that life right now. And it is becoming a big, huge stress in our lives. Because we are trying to figure out, कि अरे दूसरा इतना खुश है, मैं खुश क्यों नहीं? Because people are just showing it outwardly. Outward show ना करके, if we start working on ourselves, automatically you will start being happy. I hope you're getting what I'm trying to say. Time management stress, overcommitted schedules, juggling between work, family, social life, and personal time can leave people feeling overwhelmed and stressed. होता ही है भाई, करना ही पड़ता है, क्या करें, सब चीजों को बैलेंस करना है, राइट? अब बैलेंस करना है और अंदर एनर्जी है नहीं तो बैलेंस कहाँ से होगा? Now you see the interrelation between self-love, self-care, and a balanced life. All are interrelated. Constant connectivity. This is a big stressor. 24/7 nature of being connected through smartphones and emails can make it difficult to fully disconnect and recharge. When do we actually get the time to recharge? आज की डेट में हम सब अपने पिलो के पास फोन रख के सोते हैं. अलार्म क्लॉक्स बंद हो चुकी हैं, शायद मिलती भी हैं कि नहीं पता नहीं, बिकॉज सबके फोन में ही अलार्म्स लगते हैं. आंख खुलते ही ईमेल्स चेक होती हैं, सोने से एकदम पहले भी ईमेल्स चेक होती हैं, मैसेजेस चेक होते हैं, और कुछ नहीं होता तो चलो सोशल मीडिया का स्ट्रेस ले लेते हैं. लाइक ऐसे लगता है कभी कभी हम सब ढूंढ रहे हैं कि स्ट्रेस मिल जाए, कहीं से तो मिले. चलो ये लाइफ अभी ये चीज ठीक चल रही है, चलो सोशल मीडिया से स्ट्रेस उठा लेते हैं, चलो किसी रिलेशनशिप से स्ट्रेस उठा लेते हैं. So addicted, we are so addicted to being stressed all the time. आदत पड़ गई है हम सब. This constant connectivity, you must figure out a way to disconnect. अगर कुछ बहुत ही अर्जेंट होगा, नॉर्मल कॉल पे कॉल आ जाएगी, ईमेल पे नहीं आएगी. Emergencies don't appear on emails. They'll probably come on a phone call. Right? It's all about you taking that decision. Environmental and global stressors. Climate change, anxiety over environmental issues, and the future of the planet is increasingly impacting mental well-being. Isn't that happening? Like, we are all worried about what is going to happen in overall planet में जो changes आ रहे हैं, in universe में जो changes आ रहे हैं. How is that going to impact us? Stress होता है. The number of earthquakes that are happening, the global warming that is happening, it is scary. We don't know what's going to happen in the future, in the near future. Things have already started changing. Global uncertainty. Political instability, conflicts, and global crisis can contribute to a sense of uncertainty and stress. So the whole point is कि
Stresses come from everywhere. Problems are everywhere, whether it is global, whether it is just your office, just your home, just your family, just your friends, or just yourself. It's up to you whether you want to take it or not. Now, you, like in a lot of my sessions, people say, हम नहीं लेना चाहते हैं, स्ट्रेस आ जाता है. अच्छा, really? If I right now pick up a ball and I throw it on your face, will you catch it or will you leave it? That is up to you. If you catch, suppose this is stress. For example, एक stress है और मैंने ये आपके ऊपर फेंका, मतलब लाइफ ने मेरे ऊपर एक ये स्ट्रेस की सिचुएशन फेंकी. अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको कैच करूं या मैं इसको ना कैच करूं. ठीक है, प्रॉब्लम आई है. वन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन. Another way is, oh my God, ये क्या हो गया, अब मैं कैसे करूं, अब मेरी लाइफ में क्या होगा, oh my God, I'm so stressed. There are different ways of handling the same situation. Now, anxiety. We talk about anxiety because, see, whenever we talk about self-love, we talk about self-care, we talk about balance in life. तो जब यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, एंड सबसे ज्यादा जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो होता है एंजाइटी, फियर, you know, all these kind of emotions that build up in our mind. That is the one that creates the imbalance in our mind. Anxiety is your body's response to stress. It's a feeling of fear or apprehension about what's to come. We are always scared about something that we can't see, है ना. अब कोई स्पिरिट भी होती है तो कुछ दिखता नहीं तो मुझे डर लगता है. अब फियर है कि ओ माय गॉड क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट द मोमेंट यू फेस इट, वो फियर चली जाती है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है. नाउ हाउ डू यू हैंडल दैट डिपेंड्स ऑन यू. अब वो हैंडलिंग इजी तब होती है जब आप अंदर से बैलेंस्ड और काम होते हैं, और वो तब होते हैं जब आप अपने ऊपर वर्क करते हैं. This exercise I normally do in physical sessions, but I will show you a demo of this right here. Can you think of all the negative emotions or feelings that you experience on a daily basis and your negative beliefs and write them down on a piece of paper? Maybe we can take 2 minutes and write this down. I'm also going to do that. I have my paper and my pen. Let's just write down all the negative emotions you're feeling right now. For example, I'm feeling scared, I have a meeting tomorrow, or I'm supposed to meet a deadline and I don't have enough time. How will I finish my work? It could be I don't have enough money and I have to pay some installments. Kuch bhi, whatever negative thoughts or emotions you have in your mind, just put them on a piece of paper. Okay. Once your list is complete, take the paper, उसको ऐसे क्रम्बल करें. ठीक है, मैं आपको ये डेमो दिखा रही हूँ, सामने होते तो हम ये फिजिकली साथ में करते. एंड दिस इज a physical example of your mind, your brain. Okay, these are my negative emotions which I am going to feed to my brain, as you can see on the screen also. ये negative emotions, ये मेरा brain है. Now I'm going to feed these negative emotions to my brain. I have my friends negative emotions जो उन्होंने लिखे हैं वो भी इसमें जा रहे हैं. Okay, और negative, some more here, some more, now more, and some more. Okay, do I have more space left? अब अगर इसमें मैं कुछ अच्छी चीजें ऐड करना चाहूँ, for example, some kind of excitement in life,
Is there any space? Hardly. तो अंदर जाएगा ही नहीं. There is no space because my mind, my brain is already full of negativity. How will positivity enter? It cannot. There is no way. So how do you delete this? How do you delete all these negative emotions that you've already stored in your brain? You need some kind of cleansing. और वो cleansing कैसे होगी? Meditation से. Oxygen intake clears away the negativity. It clears away the unwanted stuff and it fills you up with positivity. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आप घर में बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ एंड देयर इज अ नॉक ऑन द डोर, बाहर मेन डोर पे. ओके, आप वो पीप होल से बाहर देखते हैं और उस पीप होल में यू सी दीज 4 men, तगड़े से एकदम बड़े बड़े, और उन्होंने अपना मुंह लपेटा हुआ है, सिर्फ उनकी आंखें दिख रही हैं और उनके हाथ में बड़े बड़े औजार हैं. किसी के हाथ में बंदूक है, किसी के हाथ में हैमर है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में बड़ा सा बैट है. आप क्या करेंगे? विल यू ओपन द डोर और व्हाट विल यू डू? भाई अगर मेरे दरवाजे पे ऐसा कोई आएगा, मेरा सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? भाग के कहीं छुप जाओ, इसको कॉल करो, कॉल फॉर हेल्प, बट ये लोग अंदर नहीं आने चाहिए. राइट? या कोई ऐसा भी करेगा कि नहीं नहीं, अरे आइए भाई साहब, आइए अंदर आइए, चलिए साथ में बैठ के चाय पीते हैं. कोई करेगा ऐसा? आई डोंट थिंक सो. ये एक एग्जाम्पल है to show to you what we are doing with our minds, what we are doing with our brains. These sad faces, the negative emotions you see on the screen, these are the negative emotions जो हमारे mind पे आके knock करते हैं. Knock 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 knock. जो भी दरवाजे के बाहर 4 आदमी थे डरावने वाले, ये वो है. Now it's up to us. हम क्या बोलेंगे? आइए आइए भाई साहब, आइए साथ में बैठ के चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. या आप उनको बोलेंगे गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस बुला रही हूँ. या आप अपना दरवाजा खोलेंगे ही नहीं. यू विल लुक फॉर हेल्प, यू विल हाइड समवेयर, यू विल मेक श्योर दैट दीज पीपल विल नॉट एंटर माय हाउस. नाउ दिस ब्रेन इज योर हाउस एंड दोस bad and negative thoughts are those people who are standing outside. You are the one, you are the owner of your mind. You can tell your mind, no, no, these will not enter my mind. ना, मुझे नहीं चाहिए भैया, निकल जाओ यहाँ से, कट लो, निकल लो. है हमारे ऊपर डिपेंडेंट कि नहीं? है. We have that power, we have that will, we have that, but we don't execute it. हमें लगता है कि नहीं, हम slaves हैं, हम तो अपने mind के slaves हैं. No, it should be the other way around. I'm not saying you make your mind your slave, but then your mind should be under your control. And the only way you can do that is when you start practicing, make your mind strong, make your inner core strong, have that balance. Only then you will be able to have your mind under control. I hope you're getting what I'm saying. Now, this is a picture that you should have. धीरे धीरे, when you start practicing, negative emotions आए, knock knock हुआ और आपने उनको बोला, no, you are not entering. Sorry, no, I don't want to. Just go away. मुझे fear नहीं चाहिए. मैं handle कर लूंगी. Okay, don't worry. मुझे fear नहीं चाहिए. You can actually block these thoughts to enter your mind. It works. I am telling you out of experience. It does work. Then what happens is जब आप अपने mind में वो space बनानी शुरू करेंगे कि नहीं, मुझे ये negative emotions नहीं चाहिए. You will not enter my mind. Okay, I'm not letting you enter my mind. थोड़ी स्पेस बनी. अब इस जो नई स्पेस आपने क्रिएट की, उसमें आप अपने हैप्पी इमोशंस डाल सकते हैं. राइट? See, you can start filling it up with your happy emotions, your happy feelings. और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये happy emotions और happy feelings will overtake
the negative emotions. Dheere dheere, all those negative emotions will start becoming less and the positivity will start taking over. You can experiment this on yourself on a daily basis. Every minute you can work on it. And dheere dheere, you will start seeing the result for this. Now, what can you do when stress comes to visits? Stress says, knock, knock, may I come in? What will you do? Close the door. Stop overthinking. It is the biggest waste of time ever. Biggest reason for procrastination. Biggest reason for not producing results in life because we overthink. And most of the times, what we are overthinking will never even happen. But adat padi hai is just a habit. So, how do you stop that habit? By checking your mind, telling your mind, no, I will not let you in. I will not let this thought come in. Okay. I need to have my peace of mind. This is the biggest form of self love and self care that you can do. This is even more important than taking care of your physical food. Mental food is more impactful and more important than what you eat from your mouth. Trust me, it's a fact. You can try it in your life. Now, what is the best practice to reduce stress and anxiety and lead a more balanced and a happy life? Meditation, which we have already done. Effective stress management tips that can help you cope with daily pressures and challenges. Now, why this is important? Why are we talking about stress management? Is because again there is an imbalance in our lives. जब हम एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते तो स्ट्रेस तो आएगा ना. स्ट्रेस को मैनेज करोगे तब जाके भी आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं. Practice mindfulness and meditation. Engage in meditation techniques to stay present, calm the mind, and reduce anxiety. Even a few minutes of deep breathing exercises can make a difference. Exercise regularly. Physical activity is a natural stress reliever. Exercise, whether it's walking, it's yoga, or intense workouts, releases endorphins that boost your mood and reduce stress. Automatically the good hormones start flowing in your body. Automatically stress levels come ho hi jayenge, because again when you are not maintaining a balance in your life, आपकी body में hormones का भी imbalance create हो जाता है. जब सिर्फ stress hormones release हो रहे होंगे, happy hormones release ही नहीं होंगे ना, right? जैसे एक positive and negative thoughts हमने भी experiment किया, brain में डालते हैं, वैसे ही हमारे जो happy hormones and stress hormones है उनका बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है. And it directly impacts your mental, emotional, and physical health. Establish boundaries. Set clear boundaries between work and personal life. Avoid overcommitting and learn to say no when necessary to prevent burnout. We have already discussed this a few times. Get adequate sleep. Prioritize sleep by establishing a consistent bedtime routine. Lack of sleep can exacerbate stress, while restful sleep helps you feel more resilient and better equipped to handle stress. Because when we don't sleep, we do not give rest, our minds do not get recharged. Again, the way you charge your phone battery or your Apple, your iPad battery or your laptop battery, similarly, sleep is another energizer that is needed for your mind and body to get recharged so that you can perform better in your life. Practice time management. Organize your day by prioritizing tasks and breaking larger projects into manageable steps. This reduces the feeling of overwhelm and helps you stay focused. Seek professional help if needed. If stress becomes overwhelming, seek guidance from a mental health professional. Therapy, counseling, or coaching can offer strategies tailored to your specific needs.
Now, we have spoken about various aspects of our lives. We have seen examples of burning out yourself by giving out too much to others all the time. And here I'm not talking about only giving out to people, giving out to situations. I mean, हर सिचुएशन में जब हम किसी चीज की तरफ कुछ काम करते हैं, we are giving out our energy, right? Mentally, emotionally, physically. So you need to make sure that you have that management in yourself. You should know now, okay, हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती. Again, let's just revise our main highlights of today's talk. Number one, have a balance. Have a balance between your personal and professional life. Learn to set a boundary. You must know, बस अब ये boundary set हो गई. Now move forward or stay backwards. You should know when to say no, but say no politely and firmly. No need to fight, no need to get angry. Another thing, when I talk about anger, so ये जो बैलेंस है जो हमारे अंदर हमें मेंटेन करेंगे तो our life will become better. Again, it comes down to balancing your emotions as well. And wherever you see anger, anger will only come to those people who feel weak. जो लोग अंदर से स्ट्रांग होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, बिकॉज गुस्सा सिर्फ उनको आता है जो वीक होते हैं. वो इसलिए गुस्सा करते हैं बिकॉज दे फील हेल्पलेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन, सो दे लैंड अप बीइंग एंग्री, दे लैंड अप being throwing a tantrum or getting frustrated or irritated. All these things create an imbalance in our life. In सबका solution, daily practice of meditation. And again, I'm repeating, it's not difficult. It is very easy to do it. All you need to do is sit and breathe. Just breathe. Breathe. The problem is that जब हमें फ्री फंड में कोई चीज मिलती है, we do not value that. सांसें मिली हुई हैं, फ्री की मिली हुई है, पता भी नहीं चल रही है, चलती जा रही है, तो उसकी वैल्यू नहीं है. When we fall sick or when we actually die, then only probably we'll understand, but then it's too late. तब समझ के क्या करेंगे कि भाई कितनी वैल्यू थी सांसों की. So keeping a focus on your breath is the best and the only way to meditate actually. This is what is giving you life. 15 minutes in the morning, 15 minutes at night. And daily practice of doing one thing that gives you happiness, that gives you fulfillment, that makes you excited. Yes, I love doing this. If you bring about these small baby steps, changes in your life, I can guarantee you will see a better and a balanced life. And when you change ना, आसपास की चीजें अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाती हैं. जब हम बैलेंस होंगे तो हमारे इमीडिएट रिलेशनशिप्स, हमारे वर्क रिलेशनशिप्स, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सब चीजों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा. पता भी नहीं चलेगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है. But yes, because when you bring about a change in yourself, you bring about a change all around you. All right. I hope all these tips and whatever I have shared is helpful for all of you. And I'm really looking forward to more talks like these. And before I end, I'll just share my contact information as well. You guys can reach out to me on Instagram or on LinkedIn or on Facebook or on email. And if you have any questions, Dr. Sambit, maybe can we open the session for Q&A right now? If we Yeah, can, yeah. what? Yes. Anybody present over here in that one is in this session, you can ask the questions. Right now, among the participants, anybody want to ask the questions? See, Kinsuk, Harish Mittal ji, Purba Mittal ji, Satish Kumar Mittal ji. Anybody want to ask the question to our resource person? You can ask. In the meantime, I am putting into the question, other question in the chat box.
Anybody? I'm putting it in the chat box in the right now. As it can physically be seen by eyes, but stress का पता ही नहीं चलता कैसे? Sir, please can you elaborate on this question? थोड़ा clear नहीं हुआ. How to assess the stress? Assess the stress. The crux of the question is how to Yeah. assess the stress. आपकी body और mind आपको बता देगा अपने आप ही. You will know. You'll start having palpitations, or you will start feeling some kind of pain in some part of your body. It could be a headache, it could be a stomach ache, and kuch bhi, but your body will tell you. All you need to do is have that understanding with yourself, look within, and you will have an answer. Did you get that, sir? Yeah. Yes. Okay. How to be happy all the time? Possible nahi hai. Like हर चीज का opposite है life में. अगर sadness नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा happiness क्या है. अगर problems नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा solution क्या है. Right? तो happiness है तो sadness तो आएगी. Now it's all, ये हम कर सकते हैं कि हाँ sadness आई है, उसको उसके अंदर बैठ के victim ना बन जाए. ये कर सकते हैं. This power we have, that हाँ problem आई है, sadness आई है, ठीक है चली जाएगी यार, खुश रहो. होते हैं ना कई ऐसे लोग, बोलते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक हो जाएगा. So you can change your attitude like that, and again meditation helps in that, because you feel more fulfilled from within, you feel more powerful from within. How solution overthink? What is the solution for overthinking? Yeah. So I showed that example. When our mind is overthinking, you just have to tell it stop. Literally, physically tell your mind stop. Enough. हो गया. It's something like if you have a dog in your house who keeps barking, पूरा time. आप क्या करते हैं? उसको बोलते हैं ना चुप हो जाओ, बहुत भौंक ली है. Literally, I'm telling you, all you need to do is tell your mind, stop. Enough. Take a pause, close your eyes, take some deep breaths. एक दिन में नहीं होगा. It's a practice. It takes time. Slowly, habit बननी शुरू हो जाएगी. But you have to check your mind, tell your mind, stop it. How to achieve self-record? I did not get that. Can somebody? Self-actualization, मतलब अपने आप को समझना. Do you mean that? Self-realization? Yeah. Meditation. Self-realization क्या है सर? या सबसे मैं पूछूंगी है अपने आप को जानना. Right? अपने आप को जानने के लिए you will have to spend time with yourself. And to spend time with yourself, the only way is you sit in silence. You close your eyes and you just breathe, and you will know yourself. You hear your own heartbeat, feel your own breathing, feel your own self, your own thoughts, whatever is going on inside. And slowly, you will start becoming closer to yourself and start realizing yourself. That's what I can say on this. Any more questions? Can you comfortably adjust your work schedule for personal commitments? Mostly yes, but sometimes no. Nahi ho pata, because if you're asking me personally, my profession is such that I have very erratic work schedules. Suddenly I'm on a shoot for a week. I'm working morning to night, and suddenly there is no work for 2-3 weeks. So वो balance करना, again I practice all these things regularly, my meditations and spending time with myself, and I have to plan.
I make a plan कि अब इतना काम कर लिया, अब मेरा time है, I have to spend more time with my family members or with my friends or with myself. Then yes, of course, I have to make a schedule. And once you make it slowly, again, it becomes easier with practice. Like, how does work-life balance affect our overall mood and motivation at work? If there is a problem at home, हम लोग बोलते नहीं है कि बहुत इरिटेटेड कलीग अगर काम पर आए, डोंट वी से आज पक्का घर में लड़ाई करके आया है, राइट? Because you are carrying whatever happened at home, you're carrying it to work, and then something bad happens at work and you go back home and you fight with your spouse or with your children or with your parents. So because there is no balance between the two, or there is no balance within you, if you are not feeling balanced within you, then ओवरऑल जो आपका मूड है, चाहे आप वो काम पर हो चाहे आप वो घर पर हो, इट विल गेट इम्पैक्टेड एंड इट विल कम आउट ऑन अदर पीपल. So again, if you start practicing these things like meditation and doing something that you love doing, अंदर से जब खुशी आएगी तो अपने आप चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी. Overall mood and motivation. So of course, if you're feeling more balanced, you will feel more motivated, na? You will have less frustration in life. You will have less anger in life. You will have more things to look forward to. So automatically there will be motivation at work. Am I making sense? Yeah. Can you share any resources or tools that help us to maintain work-life balance? Again, knowing where to draw a line. It's a very, like saying no, I would say, is a tool. And knowing when and where to say a no is a very important thing. And as far as resources are these days, there are a lot of YouTube videos that you can constantly watch that can help you and keep you motivated. You can listen to those messages on YouTube, and आजकल तो reels भी इतनी होती हैं which motivate you. So to get into the habit, I feel YouTube videos really are helpful. Like you can just search for motivational videos or videos that can help you maintain a balance, and keep listening to these kind of things that keep you in that zone. When we stress out, we totally cut off everyone from us. What is that kind of stress? What is the solution to this? Okay, so when we are too stressed, we cut out from everyone else. It's a very natural response and it is a very good response, because automatically what your mind and body is doing, it is taking you away from everyone, because you need to sit alone and think. You need to gather that energy back to be able to deal with that stress. So it is good to do that. ये तो बहुत जरूरी है. That is why meditation is important, where you cut out from everybody else and just be with yourself. So that is a great technique to manage or balance your stress. Brahma Muhurat. Okay, kindly elaborate advantage of Brahma Muhurat, wake up and doing meditation on that time. All right. So, एक तो cosmically, like energy wise, it is said that during that hour in the morning, the energies are beautiful. आप cosmic energy काफी absorb कर सकते हैं, and practically the biggest reason for that is because there is complete silence. The world has not started yet. घर में सब सो रहे हैं, शांति है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, no doorbell is ringing, no phone is ringing. So that is a time where you can actually fully meditate without any disturbance, without any distraction. That is why the most successful people in the world are the ones, or they are the ones who are doing this practice every day. They wake up probably 4 a.m. or 5 a.m., wake up and do these practices, because once your day starts, when your daily routine starts, then you can't really take out time for meditation. 1 minute meditation बीच बीच में करना ठीक है, बट एक प्रॉपर मेडिटेशन करना मॉर्निंग के टाइम में इसलिए ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलता.
You can do during traveling. So that the technique that I just taught, the breathing, whether you are traveling in whatever train, plane, by road or whatever, like what I said, moving vehicle mein na kare to it's better, but in the moving vehicle, you can probably do it with your eyes open also. All what need to do is concentrate on your breathing. मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान लगाना. ध्यान लगाने का मतलब एक चीज पे फोकस करना. Now when your focus is on your breathing, you are meditating. Right or wrong? So that is what meditation means. And जितनी short होगी उतना easy होगा traveling में करना. चाहे आप दिन में 10 बार ही कर लो. Whenever you take a break, sit somewhere for a minute or 2 minutes and just do breathing. That is it. The questions are over. Right now, over to CA Hari for vote of thanks. Thank you, ma'am. Thank you so much for your excellent deliberation. Thank you. So now I request CA Purva Mittal, Secretary of our branch, for vote of thanks. CA Purva Mittal ji. Purva, your Unmute voice is not yourself. Unmute. CA Purva Mittal, unmute. Thank you, Hariji. It has been such an honor to be part of this wonderful webcast on Balanced Bliss Nurturing Your Well-Being, organized by Professional Skills Enrichment Committee ICI. On behalf of the Professional Skills Enrichment Committee, we would like to extend our heartfelt gratitude to our speaker, Ms. Ranita Kapoorji, for her enlightening session. Sincere thanks to event enablers from our Sri Ganganagar branch of CIRC, ICI, who enabled the webcast throughout. A wide round of applause and thanks to the organizer, Professional Skills Enrichment Committee, ICI, our today's speaker, Ms. Ranita Kapoorji, and other stakeholders made the webcast a memorable one. Finally, we would like to thank all of you present here and helping us make the webcast a great success. Thank you all. Thank you. With this, I conclude the today's webcast. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am.